Good evening, everyone. So, in the today's paper solution lecture, we are going to take solution of test series 2 language. So, here is the first question from language. The question is the Dead Sea is dash. So, the Dead Sea, the answer is option number C, many times as salty as the other oceans. And where is the answer in the passage? Look here. It is extremely salty, many times as salty as the other oceans. So here is the answer in the passage. Option C is the correct answer. The next question, question number 2. What are the things that survive in the Dead Sea? So the correct answer is option number C only. Only some tiny microorganisms survive. It is option number C. Where is the answer? Here is the answer. Nothing can survive in this lake except for some tiny microorganisms. So option C is the correct answer. Shivam Guge, Hello, ma'am. are you there, Shivam? Yes. Yes, Shivam. So, what is the next question? One cannot sing in the lake because it, And what is the answer? option number 4, it has a high density. Here is the mistake in the question. This is the word sink, S-I-N-K, sink, not sing. One Yes. cannot sink in this lake because It has a high density. it has high density. It is the correct answer, option number D. The next question, question number 4. What word from the passage means stay alive is? Say option number B, survive. सर्वायु स्टे लाइव मतलब जिंदा रहना सर्वायु मतलब भी जिंदा रहना सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 The maximum width of the Dead Sea is 16 kilometers. yes it's 16 kilometer width is 16 kilometer and if they ask about the length it's 79 kilometer 79 kilometers. yes they are asking about width so it's 16 kilometer mentioned in the passage so option b is the correct answer. The next question, question number 6, it is the next passage about giraffe. Ma'am, question is giraffes ... give expression of gentleness. Option number B, eyes. Yes, his eyes. Here is the answer. Its eyes, which are dark and soft, give this huge animal an expression of gentleness. So, the answer is option B, eyes. Next question, question number 6. Sorry, 7. What about sixth question? Seventh. Yes, it's seventh, correct. The question is what helps giraffe to protect itself? The answer is its forelegs. Hind legs, sorry, hind legs. लेग्स सो उसके जो लेग्स है उससे वो क्या करता है एक स्ट्रॉन्ग किक दे सकता है जिसकी वजह से उसके लेग्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 No, दिस इज क्वेश्चन no other animal is as ... tells giraffe in the world. Answer is option number B, tall. यस ही इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे लंबा एनिमल है वो
इसका मतलब और कोई एनिमल नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनाया गया है, राइट। दैट्स व्हाई एज टॉल एज जिराफ, मतलब और कोई दुनिया में एनिमल नहीं है जो जिराफ के जितना लंबा है। ही इज द टॉलेस्ट एनिमल। यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है और ये नो अदर का सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होता है। दोनों का मतलब है कि जिराफ जो है वो दुनिया में सबसे लंबा एनिमल है, Yes. टॉल एनिमल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. The eyes of a giraffe are option number D, dark and soft. Dark and soft. Here is the answer. Its eyes which are dark and soft. इसके Yes. eyes जो होते हैं जिराफ के कैसे होते हैं, तो dark and soft होते हैं। The next question, question number 10. The opposite word of the hug is hug tiny. No, it is not word hug. It's huge. 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 Huge का मतलब होता है बहुत बड़ा। Then answer will be tiny. Tiny means बहुत छोटा, huge मतलब बहुत बड़ा। So these are the opposite words. Option C is the correct answer. Next question, question number 11. किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं। शिवम, raise your hand students. Raise your hands please. No? Okay. Prabhas is here. Prabhas. Prabhas, this is the 10th question. It is passage about Taj Mahal. आपने पढ़ा होगा पैसेज जब आपने पेपर सॉल्व किया था। अब हम पैसेज डायरेक्टली क्वेश्चन लेंगे। सो प्रभास, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Prabhas, read the question. And the question is, the Taj Mahal was built by. किसने Ma'am, बनवाया? the answer is Shahjahan. Shahjahan is the correct answer. Shahjahan. So this is the passage. Where is the answer in the passage? Ma'am, in last third line. Yes, Emperor Shahjahan, Hello, ma'am. grandson of Akbar, built the Taj. Here is the answer, right? Okay. Next question, question number 12. Read the question. The Taj Mahal stands on. Answer is B. The answer is B. Quadrilateral platform. Platform. The next question is, who was Shahjahan? Grandson of Akbar. B. Grandson of Akbar. And here is the answer. Emperor Shahjahan, the grandson of Akbar, built the Taj. It means he was grandson of Akbar. Yeah. Next question. The Taj Mahal is situated on the bank of Yamuna River. Ma'am. Here is the answer. Ma'am. Yes. Ma'am. Yes, beta. मैम मैं टेस्ट सीरीज में देखता हूँ ऑप्शंस ए बी डी सी ऐसे होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, जिन क्वेश्चंस में हुए हैं वो हम करेक्शन कर देंगे वहां पर, ठीक है। दिस इज यमुना। ये इसमें भी वैसे ही है। हाँ, ए बी सी। ओके अभी मैंने देखा। ओके, तो यहाँ पर सीक्वेंस ए बी सी डी होना चाहिए, तो ए बी डी सी हुआ है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. मुमताज महल वाज क्वीन ऑफ शाहजहां। Shahjahan. Okay, where is the answer?
Here is the answer. Yes. Emperor Shah Jahan, he built it. पैसेज दिखाई नहीं दे रहा, आगे का सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहा, बट द लविंग मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल, मतलब एम्पेरियर शाहजहां की क्वीन कौन थी? मुमताज महल थी. सो हियर इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इट इज द नेक्स्ट पैसेज. आगे का पैसेज है ये. यहाँ पर जो पैसेज है वो स्पाइडर्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में दिया गया है. आपने पढ़ा होगा पैसेज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Yes. And this spiders have passage back. is 8 legs. Where is the answer? Uh, Ma'am, in first line. Do you know that spiders are not insects? That are actually a group of animals related to insects that have 8 legs. 8 legs. Yes, 8 legs. Next question. Which is not true about spiders? All spiders eat lizards. Yes. All spiders not eating lizard. कुछ spiders होते हैं जो lizards खाते हैं. कहाँ है आंसर? Here is the answer. In the fourth line, some lizards are large enough to eat lizards and mice. They are saying some spiders जो कि बड़े होते हैं साइज में, वो lizards को और mice को खाते हैं. It is not meaning that all spiders. It is about some spiders. That's why B is not the statement. Next question. Some spiders catch their prey by Wrapping them in a web. in a web. Okay. Next question. People are why are spiders helpful to people? The question is from why are spiders helpful to people? यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये भी करेक्शन करना होगा. ओके. Why are spiders helpful to people? Ma'am, option number B. Option B. They eat insects paste. Where is the answer in the passage? मैम पैसेज में आंसर ही नहीं है. पैसेज में आंसर नहीं है. ओके, देखिए. Do you know that spiders are not insects, that are actually a group of animals related to insects that have 8 legs and have venom? There are many different kind of spiders. They live all over in the world and can be found in just about every habitat. They like dark places, which may include your home, closets, and even basements. Spiders are very interesting and spin silk waves to cave the prey, while others simply attack their prey. Some spiders are large enough to eat lizards and mice. Many people are afraid of spiders because they bite. Most spiders, however, will only bite it. They think that they are in danger, while most are harmless. Spiders are actually helpful to people. Look at this sentence. While most are harmless, spiders are actually helpful to people because many of them eat insects like cockroaches and mosquitoes. क्वेश्चन नहीं
चलो हेलो मैम। इसके बाद चलते हैं। यस बेटा। हेलो मैम। दिस मैम आपने कल के पैसेज के आंसर्स नहीं दिए। ये उसी पैसेज के है, कल के ही, कल के नहीं परसों के है, कल के जो है वो बाद में होगा इसके आगे। क्वेश्चन इज हैबिटेट मीन्स व्हाट? हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस। सो ये था टेस्ट नंबर 2 का लैंग्वेज का पेपर सॉल्यूशन। ये क्लास जैसे ही हम फिनिश करेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा जिसमें हम टेस्ट 3 का मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन लेंगे। ओके, सो यू कैन रिजॉइन द क्लास। मैम now only? Yes.